Good evening, everyone. This is Aniruddha, and I welcome you, everyone, to India's best online education platform, the one and only Unacademy. Hope all of you are safe. Let me know in the live chat section whether I am perfectly audible as well as visible, so that we can initiate today's session, which is a very, very important session on field capacity and permanent wilting point. Trust me, guys, this session is going to be super duper important, and just stay tuned with me for the upcoming 10-15 minutes. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से। गेट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रस्ट मी। छोटा सा टॉपिक सोच के बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर दिए। सर इरिगेशन इंजीनियरिंग ओके, बट आई हैव टोल्ड यू दोस पीपल हैव डन माय क्लासेस, सर क्वेश्चन आने वाला यहां से देखो आ गया 2023 के लिए। चलिए सर देखते हैं। सो अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अनिरुद्ध, एंड if you just say over here that I'm an M.Tech in environmental engineering from IIT Bombay, and I've mentored more than 10,000 students across the country for the upcoming 4 years. Rashtriya Puruskar I have received in 2014 for being the board topper, and I've served as a motivational speaker also across the nation. Okay, so definitely you can join my Telegram channel if you want, the official Telegram channel of Unacademy, and you can get updated about all the classes that is going to happen. और सर सबसे बड़ी बात सर, आप तो चल रहा है खतरनाक वाला डिस्काउंट, एंड वो तो चल ही रहा है सर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर एडिंग दिस पर्टिकुलर कोड दैट इज योर ANR 10 अनिरुद्ध रॉय 10 सर, you are going to get a 20% discount, man, which is going to be huge. आप समझ रहे हो सर, 20% डिस्काउंट अगेन यू आर गोइंग टू गेट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डेफिनेटली डू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोड व्हाइल सब्सक्राइबिंग टू आवर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेस. तो सर जरूर आपको तूफानी सर डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके सर, तो चलिए बात करते हैं अभी हमारे जो अगला जो हमारे टॉपिक है उसके बारे में. डेफिनेटली यू कैन यूज दैट कोड एज आई हैव मेंशन्ड ANR 10. अभी सर ये February 19 तक एक्सटेंड हो चुका है. और गेट एंड ESC के जो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, आप लोग जानते हैं, तो वहां पे इफ यू आर अप्लाइड फॉर आवर स्कॉलरशिप टेस्ट एंड इफ योर रैंक इज इन बिटवीन 1 to 3, यू आर गोइंग टू बी ऑफर्ड फुल फ्री कोर्स फ्रॉम द बेस्ट पूल ऑफ फैकल्टीज इन इंडिया. ट्रस्ट मी. तो सर किस बात की देरी है, जल्दी से जल्दी बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कीजिए. If your rank is between 4 to 10, you are going to get 75% discount, 11 to 50% discount, and 25% discount will be available for all the remaining top 100 people. तो प्लस में सर आपको डेफिनेटली you are going to get live classes, unlimited access to all the live classes, weekly tests, RIB, structured courses, crash courses, everything. But in Iconic you are going to get a personal coach, sir. one-on-one guidance होगा सर वहां पे on the preparation strategy. And trust me guys, this is the minimum rate available in India, less than 30,000. I've just checked the rate right now. Actually it's less than 30,000 for 12 months. Around 26-27,000 mein you are getting a full 1 year course, that is around 2,000 something rupees. Actually if you are applying 20% discount on it, that means it's around 2,000, near about 2,100 something rupees. You are getting a full course from the best pool of faculties in India. This is just mind-boggling. Come on, guys. Okay. So in Iconic, actually, apart from that, you are getting the personal touch, actually, right? And the special classes, these are absolutely free live classes. Actually, polls will be also there for the learners. You can raise your hand, and definitely you are going to get lecture notes also in the special classes. So do follow me on the app, and definitely do join our Telegram channel to get notified about all the special classes. Okay, and that's definitely about our new updates, where you can also select your language, in which language you want. आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी, मिक्स चाहिए जैसे कि मैं बोलता हूँ लाइक इंग्लिश विच वी से, वैसे भी आप सर कर सकते हो. तो यू कैन जस्ट चूज योर प्रेफर्ड वंस. ओके, तो बात करते हैं सर अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग छोटे से टॉपिक के बारे में, जो फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. जल्दी सर बात कर लेंगे, सो दैट यू नेवर मिस any of the classes and any of the updates. तो सर सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में, उसमें 3 तरह की पानी के बारे में हम बात करेंगे सर. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 types of waters mainly, so you are understanding that.
Okay, that's there are, if you just if I just switch myself off, actually आप देख पा रहे हो सर, G, C and H, these three things are written, that is your gravitational water, capillary water and hygroscopic water. अब ये तीनों वाटर क्या होता है, let's understand it. For example, you have applied water onto a field. आपने सर पानी जो है क्रॉप्स को दे दी, राइट, यू हैव अप्लाइड सम वाटर onto the crops. Now what is happening to that water? क्या हो क्या रहा है सर उस पानी के साथ? Okay, that's a very important thing to note. क्या हो रहा है उस पानी के साथ? Sir, what is happening basically with that water is that some amount of water that is definitely flowing above the ground. Some amount of water is definitely flowing above the ground, sir. ठीक है, ये सर मान लीजिए है आपके, right? This is the root zone of the plant. This is the plant. इतनी बुरी कभी plant नहीं होता है, fine. लाल कलर की पेड़. So this is, suppose what is happening over here, that one part of it is actually flowing over the ground, right? Understanding? So it is not staying in the root zone. Again, the next part, if I talk about, that is also not getting stored in the root zone, because that is simply joining what, sir? One second. The groundwater table, sir. That is simply going to join the groundwater table. So both these parts, both these waters, what is the similarity between both these waters, sir? It is a runoff, it is deep percolation. DP Facebook WhatsApp की नहीं सर, deep percolation है. दोनों वाटर में सिमिलरिटी यही है कि दोनों में से कोई भी रूट जोन में स्टोर नहीं हो रहा है, एंड बोथ द रीजन फॉर बोथ ऑफ देम इज एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से स्टोर नहीं हो रहा है. नेक्स्ट सर, तो जो भी स्टोर हो रहा है सर, व्हाट इज गेटिंग स्टोर्ड? देन कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक, दिस टू आर गेटिंग स्टोर्ड. ग्रेविटेशनल गया, बचा क्या सर? कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक. तो आउट ऑफ दैट कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक आल्सो वन पार्ट इज अवेलेबल टू द प्लांट, अदर पार्ट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. कैपिलरी जो है दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट, हाइग्रोस्कोपिक नॉट अवेलेबल. क्यों सर नॉट अवेलेबल? फॉर एग्जांपल, दिस इज माय चेयर. ओके, दिस चेयर इज सपोज वेट, किसी वजह से सर भीग गया है. But I cannot drink that water, right? I know that it is, wet, but I cannot drink that water. Similar is the case for hygroscopic. It is there, but I cannot drink it. The plant cannot suck that water because it exists as a thin film of moisture around the soil grains. That's the main difference actually, you are understanding. Capillary is water that you can drink. Suppose ये मेरे को एक बॉटल दिए कि बोल रहे पानी पी लो, मैं बॉटल से पानी पी लिया. Okay, but even after drinking the water, the bottle will be wet, right, little bit, but I cannot drink that water. Understanding? That is hygroscopic. समझ में आ गया आपको? तो sir, basically these are the classifications of gravitational, capillary and hygroscopic. Now let's come to our famous coconut theory. उसके में जाऊंगा, लेकिन after that, before that actually, there is a classification, there is a like distribution among different waters. ये gravitational है, ये available है, sorry, hygroscopic है, and this is your hygroscopic, this is gravitational. लिख देता हूं यहां पे, hygroscopic, gravitational, and this is available or capillary. Available को capillary क्यों बोलते हैं? Because whatever water is available, that is actually sucked by the plant through capillary action only. इसीलिए. Okay. अब सर बात करते हैं हमारे फेमस कोकोनट थ्योरी के बारे में. Okay. Let's talk about soil moisture constants. What are the soil moisture constants? Soil moisture constants are actually nothing but, okay, let's understand it. Soil moisture constants is actually nothing but weight of water by weight of soil, okay, under different conditions. तो आप देख पा रहे हो ये नारियल वाले भैया, तो right, you can see definitely this नारियल वाले भैया, that is basically happening, that is वो जब छील रहे नारियल, राइट, इस तरीके से कुछ पानी उसके मुंह पे आ रहा है, राइट, you can see it properly, clearly, okay, over here. That some amount of water is actually coming onto his face. Okay, let's assume that that particular water is gravitational water. Understanding what I'm trying to say? Let's assume for the timing. By the way sir, दोनों चीजें पैरेलली दिमाग में चलता रहना चाहिए. What is soil moisture constant? Soil moisture constants are basically weight of water upon weight of soil under different conditions. Okay, under different conditions it is this. Okay, अभी सर नारियल वाला बात कहां से आई? Let's understand it. Our famous coconut theory it is. Let's understand क्या बोलने की क्या कोशिश चल रही है यहाँ पे. Suppose you have gone to a coconut shop owner, आपने बोला भैया एक
नारियल दे देना। उन्होंने बोले ठीक है 50 रुपए दे दो, आपने दे दिया। छीलते हैं पहले वो पिछले स्लाइड की तरह, कुछ पानी निकल के आ जाते हैं। कैन यू ड्रिंक दैट वाटर? इज इट अवेलेबल टू यू? नो सर, ग्रेविटेशन चला गया। ओके, आफ्टर दैट it is given to you. That means which two waters are there in the coconut when it is given to you? Sir, capillary and hygroscopic. इस स्थिति में कोकोनट आपके हाथ में थमा दिया जाता है, which is the condition of field capacity. ऐसे कोई बुक में नहीं लिखा होगा, गारंटी है इस बात की। By the way guys, if you are new to this channel, please do hit the subscribe button, like and share this video to all the other people so that everyone can enjoy this super duper session. Okay, तो समझते ऐसे चीजों को, क्या हो रहा है कहानी। दैट इज सपोज ये जो नारियल है, ये नारियल जब आपको दिया जा रहा है, दैट मीन्स विच वाटर्स इज द कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक। हु आर यू सर? प्लांट। अपना नाम मत बताने लगना कमेंट सेक्शन में। आप सर कौन हो? प्लांट हो। ये रूट जोन जो है ना प्लांट की, वो कौन है सर? दिस इज द स्ट्रॉ। आप पानी पी रहे हो, नारियल पानी, लेकिन सर पीने के बाद भी कुछ पानी रह जाता है ना अंदर, राइट? दैट इज व्हाट वाटर सर, हाइग्रोस्कोपिक। कुछ लोग ऐसे बोलते भाई पैसे दिए पूरा का पूरा मुंडी घुसा देते हैं नारियल के अंदर भाई पीने के बाद भी, देखे हो कि नहीं? राइट, यू मस्ट हैव सीन इट। बट इवन आफ्टर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे कैन नॉट ड्रिंक द एंटायर वाटर। मे बी लिटिल बिट मॉइस्ट तो रहेगा ना, मॉइस्चर वेन एवर यू आर रिटर्निंग द कोकोनट ऑल्सो, दैट वाटर इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो ग्रेविटेशनल गॉन, given capillary hygroscopic ये नारियल ही है, right? Capillary and hygroscopic. Capillary you have drunk, hygroscopic you cannot, you are returning. Full story clear, no problem. So what is field capacity sir? It is written, it is the amount of maximum moisture that can be held by the soil against gravity. Exactly. Field capacity में मतलब क्या है सर? नारियल जब आपको दिया जा रहा है, that means which waters are there? Capillary and hygroscopic. यही तो वही वाटर है ना जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके स्टोर हुआ है रूट जोन में, बिकॉज द अदर वाटर इज अ ग्रेविटेशनल वाटर दैट इज तो नॉट स्टोर्ड इन द रूट जोन। पहले ही मैंने डेफिनेशन में लिखवा दिया था आपको दैट इट इज द वाटर दैट इज नॉट स्टोरिंग, नॉट गेटिंग स्टोर्ड इन द रूट जोन। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी, गेटिंग माय पॉइंट? सो फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया सर? इफ आई मैथमेटिकली डिस्क्राइब इट, सर फील्ड कैपेसिटी है क्या, मतलब क्या है क्या ये? सर इट इज अ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। अच्छा, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट आपने बताया था, दैट्स अ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अच्छा, तो ये कौन सा कंडीशन है सर? व्हेन द कोकोनट इज सर्व टू यू। अच्छा, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल, मतलब इट इज वेट ऑफ विच वाटर सर? कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपिक। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल गॉन। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज दिस सर? सर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या बोलते हैं इसको? सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। अच्छा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट है, मतलब इट इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल। बट कब? व्हेन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो soil moisture constant, but it is at that moment when you are returning the coconut. देख रहे हो सर, खोखला बन गया जब से, पूरा मलाई पानी जो है पी लिए सब, उसके बाद जब आप लौटा रहे हो, इट इज अंडर दैट कंडीशन. सो विच वाटर इज देयर सर? इट इज ऑल्सो वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल. ओके, इट इज ऑल्सो द सेम, बट इट इज वेट ऑफ विच वाटर सर? हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि कैपिलरी तो आपके पेट में है. Understanding everybody, getting my point? Okay. Now the main thing actually comes over here, that is basically the soil moisture constants. Actually, if you want to express it in terms of the depth, अगर सर आप इसको depth के terms में like express करना चाहते हो, then how you are going to do it? Just 1 second please. Okay. 1 second. So what is happening that it is always convenient to express anything in terms of the depth, क्योंकि सर उसमें क्या होता है, नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, ओके फाइन. तो उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, इट्स लीनियर, सेंटीमीटर मीटर इंस्टेड ऑफ लाइक वाटर कंटेंट केजी किलो न्यूटन मीटर क्यूब लीटर एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स लीनियर, सो इट्स वेरी इजी बन जाता है. तो चलिए सर देखते हैं दैट एनी सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, सपोज इट्स एनी सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट इज देयर, हाउ टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. क्या मतलब डेप्थ के टर्म्स में कैसे हम इसको एक्सप्रेस करें.
ओके पहले हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सर सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट का मतलब आपने क्या बताया था सर इट इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल अच्छा सर वेट ऑफ वाटर आई कैन राइट सर एरिया इनटू डेप्थ ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर व्हाई बिकॉज यूनिट वेट मींस वेट पर यूनिट वॉल्यूम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू जी एम जी इज वेट मास पर इसको बोलते हैं सर रो गामा इज इक्वल टू रो जी डेफिनेटली सर आप सॉइल में या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में जरूर सर आप पढ़ चुके हो राइट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से so a into d into gamma w what is weight of soil sir weight of soil is basically area into capital D into gamma soil you understanding the point so it's basically d into gamma w capital D into gamma soil ये से समझ में आ गया आपको this is what sir this is soil moisture constant so what is small d is the depth of water understanding sir तो ये depth of water क्या है sir कैपिटल डी गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इनटू सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट जो भी सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट बोलेगा उसका यहां पे ये डी है क्या उस सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट में वाटर का डेप्थ सो सर इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी अच्छा फील्ड कैपेसिटी वाला सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट तो आई विल पुट हियर फील्ड कैपेसिटी यू विल आस्क मी व्हाट इज द डेप्थ ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डेप्थ ऑफ वाटर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो यू विल से अच्छा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में डेप्थ ऑफ वाटर मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाला सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट की जगह यू हैव टू पुट द कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन तो ये फील्ड कैपेसिटी में डेप्थ ऑफ वाटर मतलब क्या क्या है कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपिक फील्ड कैपेसिटी मतलब नारियल भरा हुआ ग्रेविटेशनल गया डेप्थ ऑफ वाटर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मींस ओनली हाइग्रोस्कोपिक राइट सो डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर ये क्या होगा अवेलेबल का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था कैपिलरी सो सर कैपिलरी मींस कैन आई राइट डीसी इज इक्वल टू आई कैन राइट डीसी प्लस डीएच माइनस डीएच डीसी इज इक्वल डीसी प्लस डीएच लिख सकता हूं ना सर डीसी प्लस डीएच को तुम क्या बोलते हो डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी डीएच को तुम क्या बोलते हो डेप्थ ऑफ वाटर एट परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट एंड यू नो द एक्सप्रेशंस फॉर बोथ तो सर आपके पास आ गया डेप्थ ऑफ कैपिलरी वाटर का एक्सप्रेशन गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इनटू डी ये दोनों में ही है देखो इट इज देयर इन बोथ ऑफ देम राइट गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू इनटू डी ओनली द डिफरेंस इन द सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट कॉमन ले लो बाकी पोर्शन को and you will get the rest of it so you are understanding basically this is the very important formula for it okay let's now solve a problem enough of theory we have done what is the moisture depth available for the plant in the root zone in centimeter very important sir NAT type question में सबसे ज्यादा important चीज है unit of 1 meter depth soil if the density of the soil is this is okay fine तो आप लोग सर जानते हो depth of available water मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल पूछा है सर दैट मींस बेसिकली कैपिलरी वाटर का डेप्थ पूछा है और इसका फॉर्मूला सर आपने कुछ देर पहले ही डिराइव कर लिए FC माइनस PWP एम आई अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू पीपल जल्दी एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स तो एक बार जरूर थम्स अप कर दीजिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर कर देना सब्सक्राइब बटन ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट very इंपॉर्टेंटली गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू तो सर नहीं दिया हुआ है बट सर रो तो दिया हुआ है ना डेंसिटी इज गिवन बस उसी से काम चल जाएगा गामा इज इक्वल टू रो जी कुछ देर पहले पढ़े थे हम राइट तो 1500 इंटू जी और वाटर का भी सर 1000 इंटू जी यूनिट मस्ट बी सेम 1500 kg पर मीटर क्यूब ये भी अच्छा सर कैपिटल डी इज डेप्थ ऑफ सॉइल इन some questions also you can find the depth of root zone ऐसे भी सर आपको मिल सकता है एक ही बात है because you are going to take the depth of the soil up to the root zone only उसके नीचे क्या हो रहा है मार में जाए okay you don't need to take care of that why because sir आप soil mechanics नहीं पढ़ रहे हो यहां पे आप irrigation engineering पढ़ रहे हो तो जहां पे root zone है till the depth where root zone exists you have to be only taking into consideration the depth of soil up to that point only but remember ये D का जो यूनिट होगा इस D का भी वही यूनिट होगा व्हाई बिकॉज गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू यूनिटलेस FC PWP ऑल आर सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट माने वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड सॉइल दैट इट इज नॉट मॉइस्चर कांस्टेंट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स दैट इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड याद रखना सर बट ये रेशियोज है समथिंग राइट रेशियोज है 30% माने 0.3 वेट ऑफ वाटर ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ राइट सो इसका जो यूनिट होगा इसका भी वही होगा 1 मीटर दैट मींस 100 सेंटीमीटर it is 0.3 minus 0.1 right so the answer is basically coming around
30 centimeters. So that is the answer. I hope you have enjoyed this small video. Definitely do join Unacademy for more such super duper contents, and do follow me on the app and do subscribe to our channel for daily such super duper notifications. Don't forget to turn on the notifications for all the PDFs. Definitely do join our Telegram channels, and do guys hit the like button, share the session, join our plus courses with the super duper code that I've told you, ANR10, with a whooping discount of 20%. That is less than around 30,000, less than 25,000 around you are getting these courses, right? So I'm expecting you everyone to join the plus courses. That's all. This is Aniruddha signing off, meeting you very soon in my next video. Bye, take care.